हेलो गाइस, नवनीत हियर बैक विद अनदर फ्रेग्रेंस वीडियो। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक फ्रेग्रेंस की विच हैज़ लॉट ऑफ मिक्स्ड इमोशंस, मिक्स्ड रिएक्शंस, मिक्स्ड रिव्यूज़ एंड हो सकता है काफ़ियों को ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद हो एंड बहुत लोग इस फ्रेग्रेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। द फ्रेग्रेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट दोस्तों इज़ फ्रॉम द ब्रांड रसासी एंड दैट इज सुरहा। सो रसासी का सुरहा जो फ्रेग्रेंस है, I personally love this fragrance and a lot of people already told me and cautioned me that you shouldn't buy this fragrance and there were a lot of be awares, but still in spite of all those red flags दोस्तों, I still bought this fragrance and I personally love this fragrance. Not only the bottle, the packaging, but everything about this fragrance. It's very raw. So by raw what I mean is it is not very well done. It has definitely a lot of effort put into it, but this is not a fragrance which is very fine. So if you talk about finer fragrances, you have a lot of fragrances which have very processed, very sweet, leathery kind of taste, but this fragrance is very raw. It has the top notes of this fragrance is tomato leaf. So tomato leaf brings a lot of bitterness into this fragrance, and apart from bitterness, it has some sweetness, but still the most dominating note in this fragrance is the leather. And apart from that, there is some amount of oud wood as well. So in today's video, we'll be talking about Rasasi Shuhrah and we'll be seeing what mistakes do people do when they buy Rasasi for the first time. Now, let's talk about Rasasi's other fragrances. The major mistake which people do when they buy Rasasi Shuhrah versus any Rasasi fragrance, let's say Darhi's, apply these fragrances in heavy amounts, let's say 5 sprays, 10 sprays, it still feels good, right? बट सो इज़ नॉट द केस विद सुरहा। सुरहा में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज सुरहा एक फ्रेग्रेंस है जो फ्रेग्रेंस ऐसा नहीं है कि आप ये फ्रेग्रेंस को आप जेन्युइनली अगर आप इसे हैवी क्वांटिटी में लगाएंगे तो इन स्पाइट ऑफ द ओकेजन दिस फ्रेग्रेंस माइट टर्न आउट टू बी वन वेरी ऑफ पुटिंग फ्रेग्रेंस, बिकॉज ये फ्रेग्रेंस खराब नहीं है दोस्तों, आपने इसे लगाया बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में है। यू हैव टू बी वेरी cautious with this. Best thing about this fragrance is that this is a beast fragrance. Now when I feel beast, I try to go with Rasasi Shuhrah. You have to apply it adequately, not more. जैसे कि दरहीज के साथ हम 5 स्प्रे 10 स्प्रे कितने स्प्रे भी करें, there is it feels less, but with Shuhrah you have to be very cautious. 5 sprays at max for a very intimate occasion, 2 to 3 sprays on a very daily basis. So अगर आप डेली बेसिस में ये फ्रेग्रेंस यूज कर रहे हैं, 2 से 3 स्प्रे से ज़्यादा दोस्तों आपको मारने की जरूरत नहीं है। प्रिफरेबली अप्लाई टू योर क्लोथ्स में अप्लाई करने से इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज इसकी लास्टिंग जो है दैट इज बीस्ट। नाउ बीस्ट लास्टिंग से अराउंड 8 घंटे की लास्टिंग आपको मिलती है इस फ्रेग्रेंस में, 8 से 9 घंटे की लास्टिंग, एंड इट डज नॉट एंड देयर। मे बी बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप इस फ्रेग्रेंस को लगाए एंड यू आर इन अ कोल्डर नॉट इन अ वार्मर बट अ कोल्डर इन्वायरमेंट, एंड आप देखोगे कि फ्रेग्रेंस अगले दिन तक लास्ट करता है। सो 24 आवर्स तक लास्टिंग हो सकती है इस फ्रेग्रेंस की इफ़ यू अप्लाई इट very heavily. So that is why I am asking all of you guys to think twice before buying this fragrance, because this is a good fragrance. ऐसा नहीं है कि अच्छा fragrance नहीं है, plus this is not very expensive. 3000 के अंदर आपको ये फ्रेग्रेंस मिल जाता है। राइट नाउ फ्लिपकार्ट पे देयर वाज सम सेल विच गॉट यू वर गेटिंग दिस फ्रेग्रेंस फॉर 2500 समथिंग विद द कार्ड, एंड अभी भी 2600 के आपको फ्रेग्रेंस मिल जाएगा। सो दिस फ्रेग्रेंस इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। लेट्स टॉक अबाउट द बॉटल ऑफ द फ्रेग्रेंस। द बॉटल ऑफ द फ्रेग्रेंस इज वेरी वेल डन, वेल डिजाइंड, द कैप इज वेरी heavy, this atomizer is good. I personally like the bottle. At the bottom of the bottle you can see this fragrance is made in Dubai. So all of these fragrances are made in UAE, and Darhi's is one good fragrance, but Shuhrah is on another level. Now first of all, the first looks of the fragrance can be very deceptive. आपको जैसे एक blue bottle दिखेगा, so blue bottle what we most of us assume is it will be a very aquatic, fresh kind of fragrance. That is a trap, because this has heavy raw leather in this fragrance. So raw leather मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों because it can get very edgy at times. बहुत बार ऐसा होता है कि these fragrances will not be appreciated by a lot of people. A lot of people say that this smells like smoking a cigarette, or a lot of people say that this smells very has a lot of incense in it. I agree with them to some extent, because this is not a bad fragrance. This is just a fragrance which was designed in that particular way, wherein you have to apply it moderately. सो अगर आप मॉडरेटली लगाए इस फ्रेग्रेंस को, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स, एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू विद दिस फ्रेग्रेंस इज लेयर दिस फ्रेग्रेंसेस विद सम स्वीटर फ्रेग्रेंसेस। अगर आप कोई स्वीट फ्रेग्रेंस को लेयर करें, दैट कुड ब्रिंग दिस ब्लेंड टू बी मच मोर परफेक्ट. That is about Rasasi Shuhrah. I think that this fragrance has a lot of reviews already, a lot of controversial reviews. Some of the people hate this fragrance. I for one love this fragrance because what is
द पॉइंट ऑफ कलेक्टिंग फ्रेग्रेंसेस व्हेन यू डोंट गेट टू स्मेल डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस। अगर सारे फ्रेग्रेंसेस ही एक्वाटिक फ्रेश होंगे या सारे फ्रेग्रेंसेस ही लेदर बेस्ड सिंपल लेदर फ्रेग्रेंस होंगे, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ रॉ मैस्कुलिन लेदर। सो मैस्कुलिन दोस्तों के लिए हमारे ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। पीपल हु लाइक रॉ फ्रेग्रेंसेस लाइक टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस, टॉम फोर्ड टस्कन लेदर, टॉम फोर्ड के फ्रेग्रेंसेस जैसे वैसे फ्रेग्रेंसेस जैसे ऑम्ब्रे लेदर, ये सब फ्रेग्रेंसेस के कैटेगरी में अगर आप फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हो तो रसासी सुरहा बिल्कुल ट्राई करना, बिकॉज रसासी सुरहा में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं इसमें ज़्यादा ही नोट्स डाला है इन्होंने, एंड सम से दैट दिस फ्रेग्रेंस हैज़ टेकन अ वेरी बैड शेप, बट आई लव इट। इनका जो ब्लेंड है दैट विल गेट यू लॉट ऑफ नोटिस। मे बी सम पीपल डोंट लाइक इट, मे बी सम पीपल डू, बट स्टिल द पॉइंट इज इफ यू लाइक इट यू वेयर इट, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट वेयर इट, बिकॉज परफ्यूम इज एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जो आप सबके लिए नहीं सिर्फ अपने लिए पहनते हो। अगर आपको खुद पसंद है परफ्यूम, व्हाई नॉट वेयर इट, बिकॉज who cares what other people think? Like if you want to impress people, try to get more sweeter, fresher fragrances like Acqua di Gio or Versace Parfum, Eros, Blue de Chanel. But अगर आपको एक अच्छा fragrance चाहिए एक अच्छे रेंज में, Rasasi is offering a lot of good fragrances. And that being said, guys, in the next video we'll be talking about Darhiz. So Darhiz is another good fragrance. This is totally very different. And so हाँ, इसलिए चालू किया दोस्तों मैंने Rasasi का, because I love it. I love it and that is the truth, because मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा दोस्तों, मुझे भी थोड़े से I was a bit skeptical. I was thinking क्या पता कुछ ख़राब फ्रेग्रेंस ना निकल जाए, बट दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा इसका हाई प्रोजेक्शन है। तो 45 से 1 घंटे के बीच में दोस्तों आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन मिलेगी इस फ्रेग्रेंस से, बट बी वेरी मॉडरेट विद दिस फ्रेग्रेंस। बहुत ही अच्छे से लगाएंगे आप इस फ्रेग्रेंस को तो बहुत निखर के आएगा। अगर आप इसे ओवर लगाएंगे तो दोस्तों ये वैसा फ्रेग्रेंस नहीं है जो ओवर लगाने से और ज़्यादा बेटर स्मेल करेगा। दैट बीइंग सेड गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओकेजन। आई थिंक दैट दिस इज मोर ऑफ फेस्टिव काइंड ऑफ ओकेजन। सो फेस्टिव ओकेजन्स के लिए ज़्यादा अच्छा है ये। डोंट ट्राई टू वेयर इन टू सोफिस्टिकेटेड ओकेजन्स, ट्राई टू वेयर टू मोर फेस्टिव ओकेजन्स। जैसे कि आपकी कोई पार्टी हो गई, दोस्तों की पार्टी हो गई, आप नाइट आउट पे जा रहे हो, आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, क्लबिंग वबिंग, ये सब के लिए बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। एंड हेड्स विल टर्न, पीपल विल गिव यू गुड रिव्यूज़। जो ऑलरेडी ऑथेंटिक फ्रेग्रेंसेस लगाते हैं उनकी तरफ से रिव्यू आएगी, जो नहीं लगाते दोस्तों बहुत सारे लोग फ्रेश स्वीट फ्रेग्रेंसेस प्रेफर करते हैं आजकल इंडिया में, बट स्टिल दिस इज वन गुड फ्रेग्रेंस। लास्टली वन एडवांटेज ऑफ दिस फ्रेग्रेंस आई फील इज इन वेरी हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर दीज फ्रेग्रेंसेस परफॉर्म ब्यूटीफुली। मतलब अगर आप मुंबई का टेम्परेचर है आपका, अगर आप इफ यू लिविंग इन दिल्ली, इफ यू लिविंग इन मोर ह्यूमिड हॉट क्लाइमेट, दिस फ्रेग्रेंस कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज, बिकॉज ये फ्रेग्रेंस आपका लास्ट करता है। अनलाइक अ लॉट ऑफ फ्रेश एक्वाटिक फ्रेग्रेंस जो 15 मिनट तक आपको बहुत अच्छा फील आएगा, बट उसके बाद देयर इज नो अमाउंट ऑफ फ्रेग्रेंस लेफ्ट। दिस फ्रेग्रेंस लास्ट, मतलब इसकी लास्टिंग 8 से 9 घंटे की है। आप ट्राई कर लो, अगर नहीं हुई लास्टिंग आप मेरे से पैसे ले लेना, बट इसकी लास्टिंग 8 से 9 घंटे की है। जस्ट बी मॉडरेट विद दिस फ्रेग्रेंस। दैट बीइंग सेड गाइज, आई होप आई हैव मेड अ गुड रिव्यू अबाउट रसासी शुरहा। आई थिंक दैट दिस सॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। A lot of people have been very skeptical about this. मैं आपको पता चल चुका है कि आपको क्या करना है इस फ्रेग्रेंस का। आपको इस फ्रेग्रेंस को मॉडरेटली लगाना है, अच्छे से लगाना है, अच्छे से वेयर करना है। डोंट वेयर इट ऑन एन एवरीडे बेसिस। आई स्टिल, मतलब अगर आप पहनते हो तो ठीक है, बट आई विल सजेस्ट यू नॉट टू वेयर इट ऑन एवरीडे बेसिस। एवरीडे के लिए मे बी दरीज इज अ मच बेटर ऑल्टरनेटिव, मच बेटर ऑप्शन। हातिम इज देयर, दैट इज गुड क्लोन ऑफ वर्साचे परफ्यूम प्लस some amount of oriental notes plus Versace Parfum, so that could be one good fragrance. But if you're trying to go for all black kind of occasion, if you're wearing something all black, this could be one. If you like something raw, so raw fragrances में, if you're liking something edgy, if you're liking something more masculine fragrances की category में, this could be at the top for a very affordable price. So 3000 के अंदर आपको ये fragrance मिल रहा है, and I would personally tell you guys that if you can go and purchase this fragrance, ऑफर लगेगा, सेल लगेगा, whenever you want to buy this fragrance, but keep this with you, because ये fragrance जो है 3-4 साल आपके लास्ट करेगा, because आप इसे हमेशा नहीं लगाओगे. So obviously, that being said guys, signing off Navneet. I hope all of you have a good day ahead. Also guys, I am doing a small giveaway again, and today the fragrance is Creed. So Creed के आपको अतर फॉर्मेट में चाहिए तो Aventus का क्लोन आपको अतर फॉर्मेट में मिल जाएगा. If you want it in a deodorant format, I have the Man Company Cooper. Although this is much of a clone of Mont Blanc's Explorer, so this is much of a clone of Mont Blanc Explorer, but still अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये भी मिल जाएगा दोस्तों. And lastly, I have a few samples. One is which I've made my own personal blend, that is in the Club Intense. So इसका कैप थोड़ा सा लूज रहेगा दोस्तों. So I don't know shipping में अगर उन्होंने दिक्कत हुई तो, but still this is much more intensive because I've added a lot of attar plus perfume plus
a lot of perfumes, Club Inuit, Intense Man, सबका थोड़ा थोड़ा लेके मैं डाल दिया उसमें. So that is much more intense version. So this is the best giveaway I can give right now because ये एक मेरा personal collection में fragrance था. And lastly we have Harbor number 495. This is again a clone of Creed Aventus. So Creed Aventus giveaway, and do let me know in the comment section which fragrance you guys want, and be quick because last time I wanted to give away fragrance and बहुत सारी fragrance मुझे जल्दी देने पड़े थे. So be quick, and signing off Navneet. I hope all of you have a good day ahead.